टाटा स्टील की दूसरी तिमाही नतीजे आ चुके हैं और इस बारी हमने देखा है लॉस कंपनी का काफ़ी बढ़कर आया है। दरअसल जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा कंपनी कमा रही थी, इस पर और यहां से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन है। मिस्टर नरेंद्रन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले तो ये लॉस का फिगर अगर आप उस पर ज़्यादा हमें समझा सके, ये इम्पेयरमेंट और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से घाटा देखने को मिला है 6000 करोड़ से ज़्यादा का। क्या ये सिर्फ इसी तिमाही का हिट है या फिर ये कुछ आगे एक्सटेंड हो सकता है? थैंक यू हर्षिता। जो आपने पूछा है वो सही है। इट इज ओनली फॉर दिस क्वार्टर। इट इज अ वन ऑफ कॉस्ट, जो रिस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट है, क्योंकि यूके में आपको पता है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि व्हाट इज द सपोर्ट दे कैन गिव अस। अभी यूनियन के साथ हम लोग का बात चल रहा है टू कंप्लीट द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो उसके बाद वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड वी आर टेकिंग अ वन टाइम हिट and impairing the assets that we have there, the heavy end assets, because that is coming to the end of life. And the plan is that eventually we will transition into electric arc furnace based steel making. तो इसी कारण हम लोग पूरा जो है we've done an impairment of the investment we've made there in the past so that we can start with a clean slate. तो गोइंग फॉरवर्ड फिर कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऑफ कोर्स ये बटेगा यूके की सरकार और आपके बीच, लेकिन क्या उसके लिए पर्याप्त पूंजी है या फिर कुछ आपको फंड्स रेज करने पड़ेंगे वहां? नहीं, अभी जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है विद द यूके गवर्नमेंट ये है कि द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू कॉस्ट अबाउट 1.25 बिलियन पाउंड्स। उसमें से 500 मिलियन पाउंड्स विल कम फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट एंड 750 मिलियन पाउंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय अस। तो यही प्लान है। And there are restructuring costs in addition to that, which has already been factored in the impairment that we have taken. So यही अभी का plan है, पर we have a process to follow, क्योंकि अभी जो the contours of the understanding are clear. अभी हम लोग का जो consultation process है with the unions, we have to go through that. So we are currently going through that, and after that we will start the transition. तो एक इस प्लान को लेकर जो दिक्कत थी वो तो एड्रेस हो गई, लेकिन यूके के बिजनेस ऑपरेशंस में अभी भी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं और वही दरअसल आपका बिजनेस या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस को इस क्वार्टर ड्रैग कर रहा है। एग्जैक्ट दिक्कत क्या है? एबिटा लॉस इस क्वार्टर ज़्यादा घट आया है कंपेयर टू व्हाट द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। Is there any scope of improvement in the coming quarters, या फिर जैसे कोकिंग कोल के कॉस्ट बढ़ेंगे तो थर्ड क्वार्टर में भी ये प्रेशर रहेगा? तो यूके का बात करें तो यूके द मेन इश्यू इज द करंट एसेट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव एंड आर नॉट इन अ गुड ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज दे आर ओल्ड एसेट्स व्हिच हैज कम टू द एंड ऑफ लाइफ। तो अभी हम लोग का उम्मीद है कि वंस वी शिफ्ट टू द न्यू प्रोसेस रूट, वंस वी क्रिएट an electric arc furnace based steel making facility leveraging the scrap जो यूके में है, यूके is a net exporter of scrap, we will be far more competitive in UK than we are today. So the business fundamentally will become much stronger than it is today, should be able to stand on its own, and that's why it's very important to do this restructuring and create a business which can stand on its own and is not dependent on support from India. And I think the government sees that, and that's why they have also given us the support. It will be a way of making greener steel and more sustainable, creating a more sustainable business. दूसरा बात, यूरोप में जो लास्ट क्वार्टर में आप लोग ने देखा है, the challenge has been Netherlands. Netherlands normally has been a strong operation for us, but last 2 quarters we have struggled because we have a blast furnace which is down for relining. 40% of our production in Netherlands depends on that blast furnace. So that has been down for relining. It should come back in operation by the end of November or the first week of December. So this quarter also we will have a challenge, but it will be less than it was in the last quarter. And next quarter onwards, we should be back to positive EBITDA, which we've normally been in Netherlands. So Netherlands problem is a bit more temporary. UK is a longer term problem, which we hope to address through the restructuring actions that we are taking. Okay, coming to the India business, वहाँ पर growth steady है, but Q1 saw EBITDA per ton nearly around on a higher side, और वो थोड़ा सा correct हुआ इस particular quarter. क्या visibility है यहाँ से realizations की and overall demand की, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? तो लास्ट क्वार्टर Q2 में आप देखिए तो we had a net realization drop of around 2,400 rupees per ton compared to Q1. तो उसी वजह से you've seen some margin compression. Of course, coal prices dropped,
but not enough to fully address this issue. But going forward in India, we see margin expansion. Q3 prices will be better than Q2 by about 2,200 rupees per ton. Coking coal consumption cost, we expect it to be higher by about $10 a ton. So there will be a margin expansion in Q3 compared to Q2. Q4, as of now, we are waiting to see because coal prices are still reasonably strong. Steel prices in India will depend a little bit more on the international markets, क्योंकि international markets में अभी भी थोड़ा fragility है. पर हम लोग देख रहे हैं कि in the last few days, China has also taken some further steps. I think both in terms of fiscal incentives as well as in cutting production a bit. So we are hoping that Q4 the prices will move up compared to Q3 as well, but abhi it is a bit too early to give a guidance for Q4. सेक्टोरली ऑन डिमांड से अगर एक अंदाजा मुझे दे सके, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े बेहतर है तो बट ऑब्वियसली द डिमांड इज ग्रोइंग, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किस तरह की डिमांड है एंड एज वी हेड टुवर्ड्स इलेक्शंस क्या उसमें और पिकअप देखने को मिल सकता है? जरूर. I think the demand has been very strong. So if you really look at steel consumption, आप देखिए तो almost 10% growth हुआ है this year compared to last year, and all sectors are doing good. पहले तो सिर्फ auto sector was strong. Construction is also picked up. We are also seeing rural markets are strong because 6 महीने पहले rural markets were not so strong. Now if you see tractor sales, if you see a lot of rural sales, motorcycle sales for instance, they are also strong. Two-wheeler sales are going back to what it was at pre-COVID level. बाकी सब जो है commercial vehicles, passenger vehicles have all crossed pre-COVID levels. So overall we are seeing economic activity in India strong, and जो आपने पूछा है वो सही है. Towards the election it will keep improving because a lot of money will be spent in campaigning and in the movement of people and many other activities, and I think that will lead to its own positive impact on demand. So we are very bullish on demand. Prices depend a little bit more on the international prices. But the demand is strong. इसीलिए आप देखिए तो very few Indian steel producers are exporting much. जी. क्योंकि we are able to sell all that we produce in the domestic market. My final question सर, डेट को लेकर अब क्या प्लान है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर हल्का सा डेट बढ़ गया है एंड द प्रॉब्लम्स इन यूरोप परसिस्ट. तो जो आप टारगेट कर रहे थे डेट ड्रास्टिकली FY24 में रिड्यूस करना, वो उस माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे? क्या आप मीट कर पाएंगे अपनी गाइडेंस को डेट पर? तो आई थिंक ये साल में थोड़ा चैलेंज है. अभी भी हम लोग वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि एक चीज जो आपने बोला, यस इन यूरोप वी स्ट्रगल्ड अ बिट ऑन द परफॉर्मेंस साइड, पर्टिकुलरली इन नेदरलैंड्स एंड इन यूके. एंड सेकंड थिंग इज हम लोग का जो कलिंगनगर का एक्सपेंशन इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन. 5 मिलियन टन का एक्सपेंशन जो है, तो द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट. और इसीलिए we have to find that balance between completing the project quickly and getting the cash flows that will come out of it, and see how to balance our debt ambitions. मिस्टर नरेंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.